जब भी आप एक नया कैमरा यूज कर रहे हैं तो यूजुअली वो कैमरा के साथ में सब कहेंगे कि आपको तीन लेंसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। 16-35 की वाइड एंगल 24-70 mm, उसके बाद में 70-200 mm। तो ये पोर्टफोलियो को एक होली ट्रिनिटी कहते हैं। बट रिसेंट टाइम में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर्स हैव स्टार्टेड गिविंग यू सम रियली वर्सेटाइल ऑल इन वन लेंसेज, एंड Tamron ने अपने नए फुल फ्रेम मिररलेस लेंस के साथ में यही किया है, which is their 35-100 mm f2.8 लेंस which comes for the Sony as well as the Nikon mount। तो ये वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ये लेंस को। बस मेरा नाम है भव्य देसाई। अगर आप नए हैं ये चैनल पे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। परफॉर्मेंस देखने के पहले लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द डिजाइन, बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी। ये एक 565 ग्राम्स के वेट का लेंस है। नॉट अ वेरी बिग लेंस एज वेल, इट्स प्रीटी डिसेंट साइज। ये रिव्यू के लिए हमने इसे पेयर किया है विद द सोनी A7 IV। तो उसका जो ओवरऑल फील है इट्स क्वाइट नाइस एंड वेल बैलेंस्ड। प्लास्टिक की नेचुरली बिल्ड है, बट कंस्ट्रक्शन वाइज आई वुड से दैट इट फील्स क्वाइट नाइस एंड स्टर्डी। आपको 4 सेटिंग मिलती है यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए। यू ऑब्वियसली हैव वन व्हिच इज बटन एंड देन 3 कस्टमाइजेबल सेटिंग्स। रिंग्स के हिसाब से यू ऑब्वियसली हैव द फोकस रिंग as well, which is in front, very smooth in fact मुझे लगी। At the back you obviously have a zoom ring which is quite nice। It's not sturdy, it's not loose, it's just a perfect balance। Tamron कहता है कि इसके जो grooves हैं वो grooves उन्होंने ज्यादा से deeper बनाए so that you get a better grip while using this। Honestly it feels quite nice and I feel that it's quite good। With the price of this lens 81,000 का price है तो you would expect it to be metal mount and naturally weather sealed as well। Front का diameter जो है that's a 67 mm diameter, जो usually Tamron lenses का पूरा portfolio है वो same diameter से आता है। Apart from this Tamron कहता है कि इसका जो front है that obviously has some coating as well, so with that coating you don't get any fingerprints, smudge marks and all of these things। One last thing is that you obviously have a USB Type-C slot कि Tamron app से आप connect कर सकते हैं for any firmware updates। Overall in this department I'd say इट्स प्रीटी सॉलिड। ये लेंस की जो ऑप्टिकल कंस्ट्रक्शन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसका डिजाइन फीचर करता है 15 एलिमेंट्स इन 13 ग्रुप्स। अगर इमेज परफॉर्मेंस के बारे में बात करें देन यस द इमेजेस आर प्रीटी शार्प, इन मोस्ट केसेस कैन बी यूज्ड रियली वेल, बट आई फाउंड देम टू बी नॉट एज शार्प एज द फर्स्ट पार्टी लेंसेज इन मोस्ट केसेस। स्पेशली एजेस पे जो थी वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपको दिखाई दे रही थी, बट बीइंग अ 2.8 लेंस द परफॉर्मेंस इन लो लाइट वाज वेरी गुड। इवन द इमेजेस दैट वी कुड एक्चुअली शो यू इट वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ लाइट, लॉट ऑफ शैडोज एंड हाइलाइट्स का जो परफॉर्मेंस था वो भी काफी अच्छा था। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इमेज परफॉर्मेंस वी थॉट इट वाज क्वाइट नाइस। अब अगर वीडियो और ऑटो फोकस परफॉर्मेंस के बारे में बात करें देन ये लेंस जो है ये फीचर करता है Tamron का VXD मोटर, जो उनका एक फ्लैगशिप मोटर है, एंड यू एक्सपेक्ट दैट परफॉर्मेंस टू बी प्रीटी गुड एंड इट इज क्वाइट नाइस। फोकसिंग इज क्वाइट स्मूथ, क्वाइट फास्ट, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वीडियो ऑल्सो काफी अच्छा है। थोड़ी सी फोकस ब्रीदिंग आपको देखने मिलेगी, बट दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी स्टैंडर्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ और दिस कैटेगरी ऑफ लेंसेज, सो नॉट समथिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू बी वेरी bothered about। honestly overall video performance और auto focus performance जो था ये लेंस का वो मुझे काफी अच्छा लगा। now let's talk about the bokeh performance as well। now in this case the performance we thought was very okay। in some cases the bokehs were round, but in some cases they were spherical। I wouldn't say it's the best bokeh performance I've seen from a Tamron lens, because जो काफी सारी Tamron की मैंने lenses use की है उसमें आपको actually nice well rounded bokehs आपको मिलते हैं, but इसमें कोई एंगल में आपको थोड़े से ओवल मिलेंगे, कोई एंगल में थोड़े से अनक्लियर मिलेंगे। so I don't think it's the best lens for bokeh performance। now let's talk about the close-up performance as well। at the widest focal length it allows you to go 22 centimeters up to the subject, and of course the max focal range will go up to 65 centimeters। now performance wise I don't think that it's the best performance that you get because it maintains sharpness of the subject, but आजू बाजू का 2.8 है, इसके लिए डेप्थ जो है वो काफी सॉफ्ट हो जाता है। now they might be okay in some cases but not always work in all cases that you want to use। yes, focus wise it will definitely retain that sharpness, it will retain that clarity as well, but in terms of overall picture I don't think that it's something that I'm happy with। I would personally prefer that these pictures to be a little bit less softish on the side and would allow me to focus on a wider area when it comes to the pictures। now let's talk about chromatic aberration because वो काफी एक important होता है और हमेशा we always run it through quick MTF to see if there's aberrations or not। now in this case the CA value जो इसके ऐप ने थ्रो की है वो एक्चुअली 1.43 पिक्सल्स है। now that's quite high to be very honest। in terms of pictures you don't really see very apparent what you call aberrations unless you're really going close ups or even in cases of bokeh as well। so आपको उसमें थोड़ी सी कलर फ्रिंजिंग देखने मिलेगी। जैसा आपको याद है मैंने बोला था शुरू में कि इसमें एक लेंस कोटिंग डाली है Tamron ने जो कहता है कि फिंगर स्मजिंग एंड फिंगर प्रिंट मार्क्स है वो आपके लेंस में नहीं आएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो फ्लेयरिंग एंड घोस्टिंग परफॉर्मेंस होता है ये कोटिंग उसके लिए यूज की जाती है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वी थॉट द फ्लेयरिंग एंड घोस्टिंग का जो
जो परफॉर्मेंस था दैट वाज क्वाइट गुड। मोस्ट केसेस में जब हमने इसे देखा तो एकदम मिनिमल फ्लेयरिंग एंड घोस्टिंग हो रही थी, इवन वीडियो एज वेल व्हेन वी शॉट देन यू ऑब्वियसली सॉ दैट। ये लेंस जो है ये आप आता भी है विद द लेंस हुड, एंड इन मोस्ट केसेस वी फील दैट यू माइट नॉट रियली बी रिक्वायर्ड टू बी यूजिंग द हुड बिकॉज द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट डिसेंट, unless you're obviously using or shooting in a high contrast sort of scenario with a backlit environment, then maybe it might be a case where you might require the hood to be used. But otherwise, I'm actually quite happy with the flaring and ghosting performance of the lens. So finally, how do I find the Tamron's new 3500 f2.8 lens? Honestly, there are good and bad things. दो चीजें हैं ये Tamron की लेंस जो आपको ये ऑफर करती है जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स आपको नहीं करते। नंबर वन इज द प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये लेंस आपको मिलता है 81,000 का। इसके कंपैरिजन में मोस्ट लेंसेज जो इसके रेंज में है, फोकल रेंज के, they will either be priced above 1.5 lakhs from manufacturers like Sony, Canons and of course Sigmas, and उस केस में तो आपको एक प्राइस का बेनिफिट मिलता है फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ लेंस। नंबर टू इज दैट इट एक्चुअली गिव्स यू द वर्सेटिलिटी ऑफ अ 35-100, व्हिच मींस एक ऑल इन वन लेंस आपको मिलेगा एट दिस प्राइस पॉइंट and more importantly at an aperture of 2.8, so which means it opens a completely new sphere for you to shoot. You can use this lens obviously for street photography, photojournalism, travel, anywhere you want to. But what is the caveat? Performance, it's not the best Tamron lens that I've reviewed in recent times. हमने Tamron के mostly सब lenses review किए and we are big fans of them because they produce some really good all-in-one versatile lenses. But in this case, I feel that this lens is decent, good enough for its price, great for its aperture, but in terms of performance, I think this can be slightly better. Tamron, if you're watching, and I know you are, you can surely fix some things which in the firmware updates which will make this lens a very formidable lens, because good price point and a performance which will surely make a lot of the Sony and Nikon users why for this. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट कीजिए कि आप एक Tamron यूजर है कि नहीं, और यू कैन शेयर दिस विद ऑल द Tamron lovers as well, and until next time, happy viewing.